हे ब्रो। आई होप कि बाबा तुम ठीक हो गए। अगर ज़िंदगी में गम या स्ट्रगल चल रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं। इट्स जस्ट मेकिंग यू स्ट्रांग। टुडे वी टॉक अबाउट व्हाई इंडियन मैन स्ट्रगल विद women। ऐसा क्यों है कि कुछ भाई लोग स्ट्रगल करते हैं just because they can't talk to who to the to this women. The nearer a man comes to a calm mind, the closer he is to strength. जितना ज़्यादा एक बंदा भाई काम माइंड की पृथ्वी जाता है उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथ को हासिल करता है। जिस बंदे का माइंड काम नहीं है तो उसको ये दुनिया निचोड़ती है, निचोड़ती है और फिर बोलती है बाबा। यस बोलने का जब हम बोले हैं, क्योंकि एक कायम माइंड जो है ना वो राइट डिसीजन बनाता है। एक काम माइंड जीनियस होता है ब्रो यार। एक नॉर्मल बंदा जिसका माइंड काम नहीं है ना, उसकी गाड़ी के सामने से अगर कोई बंदा गाड़ी कट के चले जाए वो उससे भी झगड़ने लग जाता है। उसका रिएक्शन आ रहा है बेस्ड ऑन द वेरी सिचुएशन। भाई अगर वो बंदा तेरे से कट मार के चले भी क्या, अब उसको भाग के मारेगा क्या यार। तेरी ज़िंदगी में और भी बेटर सिचुएशन है। सो जस्ट फकिंग बी काम। जस्ट जा यार, कोई नहीं यार, कुछ नहीं अब मैं, है ना। ये जस्ट फक इट ब्रो। एक काम माइंड जो है ना भाई, अगर उसकी ज़िंदगी में समुंदर जितना तूफान आ जाए, समुंदर जितना तूफान होगा भाई, कोई ऐसा तूफान भी होता है। समुंदर जितना तूफान आ जाए, सारी दुनिया शोर करेंगे ना ब्रो, बट वो उस टाइम समझेगा यार। समझेगा कि गुरु, सारी दुनिया कियोस में होगी, नो द लाइक दे वोंट बी थिंकिंग, बट वो बंदा उस टाइम सोचेगा और बोट बनाने लग जाएगा, because he would come with the right decision. Everybody else, they all would run, they would react based on that very particular situation. But that guy who was calm, वो रिलैक्स रहेगा और फिर एक प्रिसाइज राइट डिसीजन बनाएगा। What we are talking about is men struggle because they were trained into performance anxiety. मैन आज इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि भाई जब उनकी ज़िंदगी में तूफान आता है तो वो रिएक्ट करने लग जाते हैं, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो सोचते नहीं हैं, और जब वो सोचते नहीं हैं तो वो एक राइट मैनर में उस सिचुएशन को होल्ड नहीं कर पाते। सो दे बिकम nothing but as a like what do you call it, reaction. They become a reaction of that particular experiment. Like कोई भी ज़िंदगी में गम आया, कोई भी ज़िंदगी में तूफान आया, किसी के घर में, like तेरे आसपास लोगों के घर फ्लड में डूब गया, अर्थक्वेक आया, तेरा घर टूट टूट गया, उस टाइम तो रिएक्ट कैसे करेगा भाई। वो चीज़ डिफाइन करती है कि यार यू आर अ मैन। लो इमोशनल वोकेबलरी। अब कुछ लोग भाई लड़कियों के साथ बातें करती हैं तो दे ऑलवेज लुक फॉर द assurance, and whatever the fuck they are feeling, they don't have the right word, they don't have the right vocabulary. अब उसके पास एक सही vocabulary नहीं होगी, जो भी वो फील कर रहा है तो वो उस चीज़ को रेगुलेट कैसे करेगा। अब किसी बंदे ने रिजेक्ट किया तेरे को तो तू बोलेगा ब्रो आई एम अ फकिंग लूजर, बट वजहें तो बहुत भी हो सकती है ना। अब कोई और बंदा होगा जिसके पास राइट वोकेबलरी होगी, वो उस सिचुएशन को बिल्कुल चेंज कर लेगा। वो बोलेगा यार टुडे वाज नॉट द डे, यू नो, वी ट्राई अनदर डे और वी ट्राई टू विद समबडी एल्स। बट वो अपने आप पे चीज़ें नहीं आने देता, वो रेगुलेट करता है उस सिचुएशन को। ज़ीरो रैप्स। अब जो बंदा लो इमोशनल वोकेबलरी है, परफॉर्म करता है एनजाइटी के पृथ्वी, तो वो ज़ीरो रैप्स में रहता है। ज़ीरो रैप्स मतलब उसे पता नहीं है कि भाई मेरे को सही वाला मसल ट्रेन कैसे करना है जो मेरे को मास्टर लोंडा बनाए। जब वो मसल ही ट्रेन नहीं होगा तो वो लोंडा जो है ना, वो बारिश के कतरों से भी बह जाएगा, और वो मिक्स करेगा, मिक्स सॉरी वो कमांड करेगा मिक्स सिग्नल्स। अगर कोई भी ज़िंदगी में उसके कड़ी परीक्षा आई तो ही वुड बी जस्ट अ गाय हु वुड ब्रॉडकास्ट बिग मिक्स सिग्नल, लाइक बॉडी यहाँ जा रही है, लफ्ज़ों की डिलीवरी में कुछ पता नहीं है कि मेरे को क्या बोलना है। सो ही वुड बी क्वाइट शेकी एट दैट मोमेंट, उसका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। अंडर प्रेशर
अंडर प्रेशर देयर टाइमिंग वॉइस एंड फ्रेम कोलैप्स। तूने देखा होगा बहुत से लोग जब प्रेशर आते हैं तो उन्हें पता नहीं है कि भाई कौन सी चीज़ कब बोलनी है। उनकी वॉइस जो है वो गिर जाती है, या तो बहुत ज़्यादा शाउट करने लग जाते हैं बिकॉज दे हैव नो कंट्रोल। और जो उनका एक्चुअल फ्रेम होता है लोंडे का वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। दैट इज़ वाई इन माई एवरी वीडियो आई हैव सेड इट कि भाई एक लोंडा वो नहीं होता कि जितना तेरे पास पैसा है, शोहरत है। नहीं भाई, जब ज़िंदगी में एक्चुअल में प्रेशर आए ना, उस टाइम तू उस तूफान के प्रति रिएक्ट कर रहा है, या उस तूफान को चैनलाइज करके अपने अंदर का तूफान जो है ना वो बदलने नहीं दे रहा है। लाइक योर फकिंग तेरे अंदर की हवाएं चेंज नहीं हो रही जस्ट बिकॉज तेरे आजू बाजू दुनिया की हवाएं चेंज हो रही हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग, दे आर सीइंग अराउंड देम। दैट्स व्हाट ट्रूली डिफाइंस अ मैन। उसका वेदर चेंज नहीं होता जस्ट बिकॉज बाहर का वेदर चेंज है। Women are not the topic, men's execution is. Chapter here Guru command, signal, nerves, reps, rejection, language, body status, logistic, text, screen. Command, not confession. What it is, men fail because they perform for approval or dumb feeling to get reassurance. बहुत से लोंडे फेल इसलिए होते हैं क्योंकि भाई वो परफॉर्म करते हैं अप्रूवल के लिए, कि इस बंदी को शायद मैं अच्छा लगूं, मैं ऐसा करता हूं तो शायद वो मेरे को अपनी ज़िंदगी में ले ले। और फीलिंग लाइक दे क्वाइटली टेल एवरीथिंग अबाउट देमसेल्फ। और वो उस बंदी को कॉग्निटिव लोड देते हैं। और जब वो कॉग्निटिव लोड देगा उसको, जब उसकी ज़िंदगी में भी कुछ गम होंगे, तेरे गम भी वो लेगी। तो भाई लीडर कौन है उस रिलेशनशिप में? यू आर द वन हु गोटा टेक द फकिंग लीड। इवन दो शी वुड टेल कि हाँ बाबा मेरे को अब सब कुछ सुनाओ, मैं तो सुनने के लिए बैठी हूँ ना। बट रियलिटी ये है कि ब्रो कॉग्निटिव लोड जाएगा उसके ऊपर, और उसको सब कुछ पता चलेगा कि मेरा लोंडा ना डिप्रेस है, तो बोलेगा बेबी आई एम डिप्रेस। कल को मेरे पास कुछ नहीं होगा तो आप मेरे साथ रोओगे ना? अबे लव, अबे भाई क्यों नहीं होएगा तेरे पास यार? क्यों चाहिए तेरे को रीअश्योरेंस? यू वुड हैव इट ब्रो, दिस इज द एटीट्यूड मैन। यू वुड नेवर फेल, इफ यू फेल यू लर्न, यू जस्ट कीप फकिंग परफॉर्मिंग। तेरे को रीअश्योरेंस नहीं ना चाहिए यार, सब कुछ मत बता ब्रो। बोथ ब्रेक, both fuck this shit. Both break authority. Command means decide, state, give option, respect yourself. तो भाई अगर तू वैसा कुछ करेगा तो तू अथॉरिटी जो है ना वो खो बैठेगा। कमांड का मतलब तू डिसाइड करे, तेरा जो स्टेट है रिलेशनशिप का वो पीस के साथ जुड़ा हो, तू ऑप्शंस दे और रिस्पेक्ट करे अपनी। You are the one who decide, you are the one who provide the options, so you have already the map how to fucking perform under heat. That's what she wants. Science plain. People from a thin slice judgment in seconds from posture, voice, pace, and micro decision. देख भाई, लोग जो है ना वो थिन स्लाइस जजमेंट सेकंड्स में बना लेते हैं। तेरा पोस्चर कैसा है, तेरा वॉइस कैसा है, तेरा पेस कितना है, लाइक कितने फास्ट बोल रहा है, कितना स्लो बोल रहा है। माइक्रो डिसीजन डिफाइन कर देते हैं कि गुरु तू उस टाइम कमांड कर रहा है रूम, या तू एक नॉइस है। calm plus calm plus decisive reads higher status than wordy charm. जो बंदा काम रहेगा और जो डिसाइसिव और डेलिबरेट मूवमेंट करेगा वही ट्रूली कमांड करेगा स्टेटस, rather than somebody who's just fucking saying shit. In a group there are two routes to status: dominance, pressure, and prestige, competence plus calm. Dating rewards calm, competence. देख भाई, ग्रुप में क्या होता है कि दो रूट्स होते हैं स्टेटस के प्रति। जिस बंदे का डोमिनेंस है अंडर प्रेशर में, मतलब कोई भी सिचुएशन टफ आई है तो, बट ये बंदा है कि यार ये बंदा ना लीडर है, ही वुड टेक द हीट एंड ही वुड, इस परेशानी से ये हमें निकालेगा। उस टाइम भी उस बंदे के पृथ्वी एक व्हाट यू कॉल ट्रस्ट है। एवरीबडी इज अंडर प्रेशर बट ही स्टिल होल्ड दैट डोमिनेंस कि यार हाँ यार ये ना ये संभालेगा भाई यार। एंड प्रेस्टीज, कॉम्पिटेंस प्लस काम। और कॉम्पिटेंस मतलब उस बंदे का कैरेक्टर अंदर से सॉलिड है ब्रो, एंड ही इज द काम। और डेटिंग जो क्या होता है, डेटिंग रिवॉर्ड्स काम कॉम्पिटेंस। और डेटिंग रिवॉर्ड किसे करती है ब्रो? काम कॉम्पिटेंस। प्रिडिक्टेबल, लो रिएक्टिव, जनरस,
with choices firm with boundaries. जिस बंदे को पता है कि भाई मेरे को बात में कैसे करनी है, इज शी फीलिंग सेफ अराउंड मी, हे हाय, कैसे वो डिलीवर कर रहा है अपने लव्स, कितनी वो जो सिचुएशन है वो प्रिडिक्टेबल बना रहा है उस प्रॉपर टेबल पे ताकि वो फील करे सेफ. दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स व्हाट the whole point. If she feels safe, if she feels like you're not reacting, you're very calm, you hold the competence, you hold the fucking dominance, और उस टाइम फिर क्या होता है भाई, she wants to get fucked by you. And also you have your firm boundaries. मतलब there are certain things you don't do and you don't let other people do. Downward inflection. Sentences landing down in slower tempo signals certainty. अब देख डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन क्या है. जब भी तू अपना सेंटेंस जो है ना लैंड करता है, जो वो लास्ट वाला लफ्ज है ना उसको कंट्रोल में रखना है. वहां तुझे अपनी वॉइस नीचे कर देनी है. यू आर ब्यूटिफुल, दैट्स इट. हे हनी, यू आर ब्यूटिफुल. जब ये चीज करेगा तो क्या होगा भाई, तेरे लफ्जों में सर्टेनिटी आएगी, तेरे लफ्जों में एक सोच आएगी. लाइक शी वुड फील लाइक व्हाटएवर द फक ही इज टॉकिंग, इट्स प्योर फैक्ट, इट्स द यूनिवर्सल ट्रुथ. Even though she's ugly, bro, she's like negative infinite out of 10, but you telling her you are beautiful. मतलब जब beautiful मैंने बोला ना, मैंने वॉइस ड्रॉप की. इसे बोलते हैं डाउनवर्ड इन्फ्लेक्शन. फास्ट टॉक प्लस राइजिंग टोन सिग्नल अनसर्टेनिटी. अब जो बंदा तेजी से बोल रहा है, अपनी टोन हाई कर रहा है, वो सिग्नल करता है भाई अनसर्टेनिटी. इस बंदे को पता नहीं है कि बोल क्या रहा है. How it shows up in life. Approval guy. So what do you like? Where do you want to go? Up to you. Reads as no leadership. अब रियल लाइफ में ये सिचुएशन है. अप्रूवल गाय बोलता है कि व्हाट डू यू लाइक, वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हो. अप टू यू. रीड्स नो लीडरशिप. मतलब वो सारे चीज़ जो है ना उस बंदी को दे रहा है. भाई वो तेरे साथ डेट पे आई है ना, बस तू लेके जा यार. उसको डिसीजन नहीं बनाना है. वो फटीग सिस्टम नहीं चाहिए ब्रो. कन्फेशन गाय. आवर शेयर्स प्राइवेट fears to stranger to feel close. Read as load. रीड एज लोड नॉट स्ट्रेंथ. तो भाई जो कन्फेशन वाले गाय होते हैं ना वो सब कुछ शेयर कर देते हैं. लाइक यार मेरे को भी ऐसा लगता है, आपको भी लाइक यार मेरे को भी ना रात अंधेले से डर लगता है, आपको भी. कम ऑन भाई, बेबी आई डोंट लाइक दिस शिट. मतलब वो इतना कुछ शेयर कर देते हैं अपना प्राइवेट मैटर. तो भाई दिस इज टू मच मैन. जस्ट डोंट गिव हर टू मच इन्फॉर्मेशन. शी डजंट नीड इट. ट्यूसडे 7 Pluto Kai 40 minutes. मतलब तू उस बंदी को ना एक लीडिंग वे से लेके जा रहा है. यू आर द लीडर हियर. यू टेलिंग ट्यूसडे 7 बजे Pluto Kai 40 minutes. अब उसको कुछ सोचना नहीं. इधर शी कैन टेल नो इट्स प्रीटी फाइन, बट you made the decision, you selected the place, you selected the time, and for how long? 40 minutes. If she's unsure, all good, I will be there 7. Join if it works. You are taking the lead. आप नहीं पूछते बाबा, oh where do you want to go, oh this is the best place, do you want to go? No bro, you're the fucking man, you make the fucking decision. That's the thing you got to understand. That's it. पानी पिएगा वो भी तू डिसाइड करेगा. उसको पीना है नहीं, बट ग्लास आगे रख उसके. If you need to leave, I'm heading out in 10. Walk with me to the gate. अगर तेरे को किसी जगह से जाना है और तू चाहता है कि यार ये भी मेरे साथ चले, तो सेंटेंस ये नहीं बोलेगा कि यार hey do you want to come with me, I'm just leaving. No, I'm heading out in 10. मैं बाहर जा रहा हूँ 10 मिनट में. Walk with me to the gate. Boom. Walk with me to the gate. She has no choice but to come in your frame, come in your orbit. Like तूने उसको choice नहीं दी. And they're like 0.1%, like 0.1% chance she would say, oh, I have a little bit time, but tomorrow, she would still give you tomorrow. But अगर बोलेगा ना, do you want to go with me? I'm going in 10 minutes. She'd be like, मतलब तू ना उसको request कर रहा है, and her mind is very prepared to respond to that particular situation. I have still walk out. Thank you. That's it. But तू बोल रहा है, I'm heading out in 10. Walk with me to the gate.
नाउ शी लाइक ओके, इस लोंडे ने डिसीजन भी बना लिया, 10 मिनट में जा रहा है और सीधा बोल रहा है कि वॉक विद मी टू द गेट, गेट तक चलो। और नाउ शी हैव नो चॉइस बट टू फकिंग कम, यू नो। अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है, बटर को ज्वाइन करना है क्योंकि तू अभी बहुत बड़ा। That's what I'm saying. Signal, clean, signal, clean, low word clarity. What it is? Mixed signals kill interest. Clarity beats poetry. तेरा सिग्नल जो है ना भाई, वो क्लियर होना चाहिए। तेरे बॉडी लैंग्वेज अलाइन करना चाहिए, तेरे लव्स की डिलीवरी क्लियर होनी चाहिए। अंडर एम्बिग्विटी द ब्रेन ट्रस्ट नॉन वर्बल ओवर वर्बल। जब अनक्लियर सिचुएशन होती है ना, तो जो ब्रेन होता है वो ट्रस्ट करता है नॉन वर्बल। डू यू अंडरस्टैंड इट? नॉन वर्बल, लाइक तू बोल क्या रहा है डजंट मैटर, बट इट it's just judging your body in your, if your words say chill but your body says please like me, अब तू एक्ट कर रहा है कि आई एम प्रीटी चिल, बट तेरी बॉडी हिल रही है, तेरी आंखें डर्ट कर रही हैं, तो वो बंदी स्कैन कर लेगी, फक मैन यू आर लूजर। So she believes the body, not what you say. Grice rules in conversation: be brief, be relevant, be clear, short, concrete line, reduce doubt. जितना ज़्यादा brief हो, जितना ज़्यादा relevant सेंटेंस लाए, जितना ज़्यादा क्लियर हो, जितना ज़्यादा छोटा रखें और कॉन्क्रीट लाइन रखें, तो उतना ज़्यादा ना डाउट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। सो यू जस्ट गेव हर अ वेरी गुड फकिंग delivery towards what your true plans are, instead of like doubting, instead of like बहुत ज़्यादा लिख रहा है, बहुत ज़्यादा बोल रहा है, नहीं man, she doesn't want that. How men fumble, overdoers compliment plus jokes, DMs plus memes, noise not signal. अब जो बंदे overdo करते हैं वो compliment करते हैं, jokes करते हैं, DM से DM memes send करते हैं, noise, and that's not a signal. मतलब ये signal नहीं दे रहे कि यार ये बंदा ना actual में कोई mystery है, actual में इस बंदे की life में कुछ बड़ा चल रहा है. So he's just a fucking noise. He's trying to make me fucking happy, but he's not the one. अंडरडूअर्स होते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, हे वेटिंग फॉर हर टू लीड, फॉग नॉट सिग्नल। ये बंदा भी कोई सिग्नल कमांड नहीं कर रहा है, बिकॉज व्हाट शी इज सेइंग, व्हाट यू डूइंग, फक व्हाट यू वांट, व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट द फक यू गोना डू, आई एम यूजिंग माय dildo right now, do you want to know? Because if you're a real man, you will be instead of dildo. Say this: you're interesting, short coffee, Thursday 6:30 25 minutes. अगर तू ये बोलेगा you're interesting, short coffee, Thursday 6:30 25 minutes, मतलब हर चीज़ ना precise बता रहा है, तू interesting है, like you are interesting, short coffee Thursday 6:30, मतलब you're already saying you're interesting, short coffee Thursday 6:30 25 मिनट के लिए. Okay, that is like precisely तू बता रहा है कि क्या होगा 25 मिनट के लिए, हम कॉफ़ी पियेंगे, and she has no choice but to join you bro. Not tonight, morning works for me, 10:30 or 12, मतलब बोल रहा है कि आज नहीं, सीधा like like you're just letting her know that not tonight, even though it's not for tonight, you're just still letting her know not tonight, morning works for me, 10:30 or 12. Okay, wow, this dude is operating from the power, so that is why he said not tonight, even though कि यार अगर तेरे को night tonight भी होना चाहिए था, but still तू बोलता है कल यार. Whether you would be saying just like tomorrow, but you added the not tonight before the next morning, that emphasized that this dude has preference. So like that's what they want. A man has fucking choices. Nerves timing under arousal. What it is: when arousal spikes, attention narrows to the threat. जब भी कभी अंडर प्रेशर सिचुएशन आए, लाइक योर एड्रेनलिन इज फकिंग हाई, तेरी बॉडी पूरी तरीके से अभी एक्टिवेट है, बिकॉज यू हैव लाइक तू उस बंदी से बातें कर रहा है, तो तेरी टाइमिंग जो है वो ड्रॉप हो जाती है, तू पूरा टनल विजन से उस बंदी को देख रहा है, तू उसमें इंटरप्ट कर रहा है, या पॉज तेरे बहुत ज़्यादा लंबे हैं. सो व्हाट इज इट डू, स्ट्रेस हार्मोन तेरा वो ऊपर जा रहा है, इट मीन्स कि तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ब्लॉक हो रहा है, कमांड सेंटर, राइट डिसीजन बनाने में जो हेल्प करता वो ब्लॉक हो रहा है. सो व्हाट यू डूइंग, यू आर फकिंग मिसिंग द टाइम, यू आर लूजिंग योरसेल्फ. साइंस ये कि गुरु अटेंशनल कंट्रोल, एंजाइटी स्टील वर्किंग मेमोरी. अब इस टाइम क्या होता है, यू ऑलरेडी फीलिंग फुल ऑफ एंजाइटी, और तेरा वर्किंग मेमोरी है जो वो क्या होता है, वर्क नहीं कर रहा है, सो यू इंटरप्ट, तुझे पता नहीं गुरु तू बोल क्या रहा है, सो यू
interrupting, whether you pause, whether you know, with a long pause, whether it's your body, तो speed करता है. अगर तू बोलेगा तो तेरे लफ्ज़ों की delivery बहुत ज़्यादा speed में होगी. So it means you're gonna lose the words because your fucking prefrontal cortex is already blocked because of the cortisol, and also your working memory is not helping you. Arousal performance curve. Yerkes Dodson. Too low, flat, too high, jittery. Best zone is calm alert. अब जब ज़्यादा alert है, ज़्यादा pressure में है, तो what you're doing is you become jittery. Like you have no, your body's moving, you're more tunneled, your amygdala is hyperactivate to threat to detect कर रहा है. Even कि तो उससे बंदी से बातें कर रहा है भाई. और अगर arousal बहुत ज़्यादा कम है, you become bored. Like you don't know fuck what you're talking. Yeah. So she see and she scans. You're like, what the fuck is going on with this guy? The best thing is when you are calm, like हाँ उससे बात कर रहा है, but you are calm. How she scans the authority. She, you know, you signals what? You signal command. You signal a man who is under control. Physiology, long exhales increase parasympathetic tone, your break, voice, steadiness, face softness. और अगर तेरे को काम रहना तो तेरे को क्या करना पड़ेगा ब्रो, तेरे को लॉन्ग एक्सेल करना पड़ेगा. इट इंक्रीजेज द पैरासिम्पथेटिक, जो वो फाइट और फ्लाइट वाला शिट होता है ना, सिंपथेटिक, वो पहले एक्टिवेट था क्योंकि यू वर जस्ट टॉकिंग टू द गर्ल एंड स्ट्रेट अप तेरा माइंड ब्लैंक हो गया, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ऊपर चले गया, तेरा वर्किंग मेमोरी जो है वो नीचे चले गया, वो स्टील हो रहा था, तेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो ब्लॉक हो गया. बट how you can recover, how can you rewire everything? What you do is you exhale long. You also can, you know, deep breathe at that very particular situation without letting her know, and boom, तेरा parasympathetic जो है वो टोन जो है वो एक्टिव हो जाएगा. मतलब you would feel more calm because तेरी बॉडी बाहर से कैसे बातें करती है, सांसों से, ऐसे समझ रहा है. सो यू ब्रेक वॉइस स्टेडीनेस एंड फेस सॉफ्टन. तेरी वॉइस जो है वो स्टेडीनेस होती है, लाइक यू कंट्रोलिंग इट, एक नॉर्मल पिच में जाती है और सीधा उसकी कूची पे लैंड करती है अगर तेरी स्टडी हुई. जेन्युइन बोल रहा हूँ ब्रो. फेस सॉफ्ट हो जाता है तेरा. हाउ मैन फंबल, मशीन गन क्वेश्चन इन द फर्स्ट 30 seconds, लाफ्टर इन अ रॉन्ग प्लेस, स्टेयर टू लॉन्ग. मतलब वो गोलियों की तरह गुरु क्वेश्चन बरसाने लगते हैं. साइलेंस के साथ तो रहते नहीं, उनको लगता है कि गुरु अगर खामोशी आए तो मतलब कुछ ऑकवर्ड हो रहा है भाई. 30 सेकंड में 300 सवाल कर लेंगे, हंसेंगे बेइंतहा, इवन के दिस इज नॉट फकिंग फनी. सो यू जस्ट लूज हर. Simple fixes don't confess. Two breath cycle before speaking, 4 in, 6 out, no announcement. You know, signal screenshot le bro. Pace cut. Whatever speed you think is normal, reduce 20%. 20%. जो भी जिस हिसाब से तू बोल रहा है कि यार मैं बोल रहा हूँ ना, 20% और कम कर दे यार. आई कॉन्टैक्ट 2 से 3 सेकंड तक बर्स्ट होना चाहिए. पूरा ज़्यादा लंबा स्टेयर नहीं होना चाहिए तेरा कि यार शी फील लाइक ओके. But the bursting is in a way that you still control the situation. I hope you understand what I'm saying. Say this: hold a sec, I will show down, small smile, continue. I will keep the shot, and you actually do. ये तू अपने आप को बोलेगा कि bro, I will slow down. Yeah. I will keep this short. जो भी मैं बोलने वाला हूँ, इसको मैं short रखूँगा. Reps. Exposure builds smoothness. What it is, you did not practice casual talk growing up, so your first try is to feel like an exam. तो मतलब तूने casual talk के साथ तू grow up नहीं हुआ था. So when you going to talk with her, eventually it would feel like an exam. It's an exam of like that, like you can be dead. Like yeah, if you fail, you fucking fail. There are a lot of people like अगर उस बंदी से बात नहीं होती तो मुझे लगता है कि यार हम तो बने ही नहीं है यार, लड़कियां are like this and they start cussing the girls, but there is no point to cuss. Like it's just like कि उस बंदे की window नहीं थी अभी. She might have a fucking stress, or she's not doing good, she's getting old, she has some other worries. तू क्यों टेंशन ले रहा है? उसने ना बोला हाँ ठीक है यार, उसकी विंडो अभी ओपन नहीं थी. 3 महीने बाद बोल उस बंदे को, क्या पता वो हाँ बोलेगी. Skill grow by repetition. So social ease is a motor skill plus timing. Skill तेरी grow होगी जब तू repeat करता जाएगा same pattern. Exposure reduce anxiety. Many tiny reps beat one big dramatic attempt. So make sure what you do is तेरी reduce anxiety कैसे होगी? When you're gonna fucking expose yourself under heat, and eventually वो जो micro reps होंगे वो तेरा feedback like as a count होगा, तेरी identity more solid होती जाएगी, and this thing gonna make you more stronger. And fuck, next time there are 100 bitches, they're gonna say bro we don't like you, you say okay, the next one. You don't care.
बट अगर तू बोलेगा एक ही बार लाइफ में लड़की को अप्रोच किया और उसको अपनी रियलिटी समझा, तो वो टाइनी रैप्स जो पहला टाइनी रैप होगा वही तेरा जिंदगी का आखिरी रैप होगा, एंड then you would be fucking virgin forever. Men overinterpret slow replies as personal defeat, then chase or quit. बहुत से भाई लोगों को अगर रिप्लाई ही नहीं आ रहा, so what they do is they reject themselves. They're gonna chase for a little time, then they're gonna quit. And they're gonna blame themselves, which is where, right, you have to blame yourself because your game was fucked up and you don't know who the fuck you are. If you quit does not mean कि तू अब किसी और बंदी के साथ text नहीं करेगा. You have to understand it's just one thing, man. Wait, there is a science behind it. Rejection sensitivity. Anxious people expect no, so they see no everywhere and overreact. Ancient जो anxious बंदा होता है ना, जब उसको किसी बंदे ने no कर दिया, she didn't reply you, or you know you said कि हाँ कॉफी पे चलते हैं 6 बजे 7 बजे, and she probably said no, and then तुझे वो ना आया तो तू हर चीज़ में no ही देखेगा, तुझे लगेगा हर बंदी no ही बोलेगी, so you would never start again. So तेरा वो rep जो है ना वो कभी दूसरा rep नहीं बनेगा. You would never try to talk to other chick because you are expecting no from everywhere. Base rate in a male heavy market, many ping pong won't convert. It's supply and demand, not your soul. वही मैंने बोला गुरु कि अगर उस बंदे ने तेरे को reply slow किया है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि bro it's you, man. She's already seeing a lot of guys in her DM. मतलब 1000 या 10,000 या 100 या 50 उसमें से तेरे को filter out करके शायद तेरे तक पहुंची नहीं वो. सो इट इज़ जस्ट ऑल्सो द विंडो व्हाट शी इज़ फीलिंग. उस बंदे की ऑलरेडी उसका बॉयफ्रेंड है, वो कैसा फील कर रही है, उसकी वो अभी विंडो ओपन है कि वो तेरे हाई का रिप्लाई करे ना मैन. सो यू जस्ट इट्स लाइक यू नो देयर लॉट ऑफ गाइज आउट देयर and it's just a supply and demand, not your soul. So it's not you, it's just a supply and demand. Maybe you fucking, you know, not at the right time frame. Offer once, don't resell. If it's fits her life, she comes. If not, your value stays intact. अगर तू एक बार बोल दे कि we can go for a coffee and all that shit, अगर वो बोले नहीं it's okay, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी वैल्यू गिर गई bro. You stay intact. That's it. Simple. आगे बढ़ते रहे. दूसरी बंदी के साथ बातें कर. Say this. No pressure. Another time. Cool. I'm around next week. Same window. तो ये भी बोल सकते हैं I'm around next week. तो क्योंकि आज जो है ना वो पृथ्वी, क्या पता आज थोड़ा उसके पीरियड चल रहे हैं, and she had a fight with her friends and fight with the family, so she's feeling very off, so she would say fuck I don't want to. Maybe next week she's not going to feel the same, so वो window खुली है, so you can try next week. 6, language warmth versus load. What it is, switching into English when stressed make you sound colder. If you're talking to her, then I would let you do one thing. What you gotta do is जब तेरी जो नेटिव लैंग्वेज है ना उसमें बात कर, जो तेरे इमोशन होंगे ना वो एक्चुअल में ट्रू फॉर्म में बाहर आएंगे, बिकॉज यू आर बॉर्न विद दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड यू हैव बीन स्पीकिंग दिस नेटिव लैंग्वेज. बट अगर तू वो चीज़ इंग्लिश में करेगा तो तू ना थोड़ा कोल्ड बन जाएगा. यू वुडंट बी एबल टू कैरी द वेरी थिंग दैट यू सपोज टू कैरी. तो वो चीज़ जो है ना, जैसे कि यार पंजाबी में ओ वीरे की चल रहा है, वो तुसी ने वो चीज़ लाइक यू नो टॉकिंग टू अ गर्ल, ओ हो यू नो यार ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਐਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, you know, I kind of feel like ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਨ ਤੇ ਲੈ ਚਲਾਂ. So it's like whatever you either you're creating a rapper, but she feels the vibe, you know. And if you're gonna talk to, you're gonna speak in English, oh, I think I gotta take you to the moon. It's just not carrying the weight, you know. अब हिंदी में करेगा तो मुझे लगता है कि हमें चांद का सफर कर लेना चाहिए. Wow, she feels it. She feels the heavy, like you know, she feels the very poetry behind this very yeah, no, very good prosody. You know, it's like she feel it, man. But in English, it would like it's like a robot. So science is foreign language effects. Second language speech lowers emotional punch and slow retrieval. You sounds like a report, not a person. As I said it, कि भाई अगर foreign language में बात करेगा तो you won't be able to carry that emotion to that particular sentence unless you're a fucking genius, and she's that genius as well. Because if she's born with this particular native language, she would वो ज़्यादा उसी language में ना emotionally उस चीज़ को पकड़ पाएगी. Otherwise नहीं. Native language for warmth lines, one sentence, not therapy. तो English ज़्यादा you know logistic के लिए use करा कर कि Tuesday 6:30 25 minute at barista or anywhere. जब warmth देना तो तू अपने native language में बात कर उससे. Oh, तो क्या कहा उसने आपको? प्रिया? क्या मतलब वो आपसे जलती है? आपने देखा है अपने आप को? So like now she feels it like, what do you mean Priya? Have you seen yourself? Like it doesn't carry that thing, you know, like if you speak in your native language that would give her warmth. She would feel more closer. Yes. Huh.
प्रिया देखा है आपने उसको? बॉडी वॉइसेस आइज डिस्टेंस व्हाट इट इज पीपल बिलीव द बॉडी अंडर स्ट्रेस तो जब भी स्ट्रेस होता है ना people believe your body not what you say science is prosody downgrade ending signal certainty upward ending signal doubt और जब तू बोल रहा है कुछ भी like for example we gonna make it समझ रहा है prosody क्या है कि मैं downward ending करूंगा we gonna make it अब यहाँ सर्टेनिटी है मतलब ये जो बंदा बोल रहा है ना बस यही होगा वी गोना मेक इट अभी जिंदगी में जितना भी तूफान है वी गोना मेक इट समझ रहा है ये ऐसे नहीं बोलना है डाउनवर्ड एंडिंग करनी है ड्रॉप करना है वी गोना मेक इट पॉज लिया मेक इट फिर ड्रॉप किया साउंड अब अपवर्ड एंडिंग जब आएगी ना तो सिग्नल होगा डाउट वी गोना मेक इट वी गोना मेक इट ना इट्स नॉट लाइक इट्स नॉट रियली कैरिंग द वेट वी गोना मेक इट that's like more like authority speaking. You know what he's talking. We're gonna make it. Not really. He's still not sure. There's a doubt. You see it? We're gonna make it. Nah. You see this like it was the prosody was a little bit there was a what do you call it? Time ज़्यादा था ना इस चीज में. Even कि अगर time ज़्यादा था like there was the pitch was not truly dropping. There needed to be a pause. I would come again. We're gonna make it. We're gonna make it. Nah, it's not. Like, fuck, this leader is not sure. Proxemics, arm length, space, feel respectful on the first meet. तो make sure एक distance होती है. There are like four kind of distance. एक से चार जो होती है, एक से चार. It's like 1 to 4 feet is like very intimate. Intimate. How do you say it? Intimacy, intimate, या something like that. You know, like you get what I'm saying. फिर 4 से 8 तक वो अलग होता है थोड़ा social का रहता है और 8 से 12 का थोड़ा थोड़ा और दूर रहता है like yeah you're a fucking stranger stay a little bit far so proximic अगर एक arm length दूर है ना उस बंदी से तो she would feel respectful towards you and she would also feel safe but if you're getting more closer you're not supposed to be that close because अब जो है ना उसका amygdala high activate हो जाएगा what the fuck why is coming so close because in India everyone is born with this one thing is that इज ही सेफ अब कोई बंदी वॉक करती है स्ट्रीट में तो वो अगर बंदा उसको कोई 9 बजे बोलेगा हे यू डू यू नीड अ लिफ्ट फर्स्ट थिंग इज नॉट कि भाई तू कौन सी गाड़ी चला रहा है शी वुड ask this question am I safe like am I gonna be safe with this guy no, that's what she's gonna think so jitni zyada so this is what I'm trying to say if you're gonna be a little bit far the distance gonna be 1 to 8 feet that's it you're gonna feel safe but if you're getting more closer that's not the right way because her amygdala और amygdala मतलब वो threat detect कर रहा है वो activate हो जाएगा तो she won't be able to think and she won't be able to give you the right answer or whatever you're trying to micro expression leak when you express emotion now the thing is जब भी तू बंदी के साथ होता है she can see you through micro expression तेरी body movement तेरे हाथों का मूवमेंट तेरी आइज कितने डॉट कर रहे हैं तेरी वर्ड की डिलीवरी क्या है सो इफ यू गोना सप्रेस योर इमोशन दैट्स इट शी वुड स्कैन इट शी वुड सी योर बॉडी सो रेगुलेट डोंट कन्फेस सो इसका मतलब क्या है कि तू उस टाइम रेगुलेट करेगा डीप ब्रीथ चैनलाइज कॉर्टिसोल कम होगा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिवेट होगा एंड यू वुड be able to deliver what you want to deliver so you would be calm सो माइक्रो एक्सप्रेशन जो है ना वो जो जज करेगी वो सिर्फ एक ही चीज़ जज करेगी इस भाई के शोल्डर ब्रॉड है आंखें जो है वो मेरे सोल को देख रही हैं आई फील प्रोटेक्टेड दैट्स इट बट अगर कन्फेस करेगा लाइक यो आई फील नर्वस all that shit you don't have to convince you have to regulate what you're feeling checklist shoulder down feet planted hand visible speak on breath and sentence down जो मैं तेरे को बोला I burst 2-3 seconds then glance off then back शोल्डर डाउन होने चाहिए फीट ऐसे होने चाहिए कि भाई तू वहीं से हुआ है तेरे हाथ जो हैं वो विजिबल होने चाहिए स्पीक ऑन ब्रेथ एंड सेंटेंसेस डाउन देख भाई बहुत से लोग ना सांसें लेते हैं ना they keep speaking they keep talking so what you gotta do is you gotta inhale and then end the sentence with a lower pitch simple
कंटिन्यूसली मत बोल, सांस ले, रिलैक्स कर। बंदी से बातें कर रहा है, मॉन्स्टर से नहीं कर रहा भाई। आई बर्स्ट 2-3 seconds, देन ग्लैंस ऑफ, देन बैक। 2-3 सेकंड देख, डांट मत कर, आई कंपटीशन नहीं है, जस्ट लाइक बर्स्ट इट। That's it, like you are in the very moment. Then back to her eyes. Say this, nice to meet you. We'll keep it short today. Status, taste, flex. What it is, flex signal neediness, taste signal standards. Costly signal logic, real status shows as selection. What do you refuse? And consistency, habits, not displays. Now you got to understand, bro. जो actual में real बंदा होता है ना, he shows by selecting and by refusing. I don't need to chase the chicks. I don't need their approval. I am what I am. मैं flex नहीं करूँगा. I went to the war. I have my scars और मेरे scar जो हैं वो बयान कर रहे हैं. So he is the man who is not flexing, but he has his whole life full of data that speaks what? That he's the true G. And the consistency habits not display. So वो जो उसकी habits हैं, he's doing it for himself, not to display. Like I play golf, I train every day no matter what I feel. This is the things that he do regardless what he feels. Prestige rises from competence and generosity, not bragging. देख भाई, prestige एक ऐसा status होता है जो लोग तेरे को देते हैं just because they respect you. मतलब वो तेरे से डरते नहीं है ना कुछ. They just simply want to respect you. तेरी dominance जो होती है वो pure तेरी competence से आती है. The skills you have, the ability you have to deal with the stress. So they are totally rely on you. जब भी कोई खौफनाक moment होता है, they call you or they all are trusting you. You are the useful guy. जब shit जो है वो storm, like when shit hits the roof. And generosity, not bragging. और ये जो बंदा होता है वो brag नहीं करता. He's generous. It shows कि भाई he try to help other people. It speaks that he already has things in abundance, so he doesn't really care. Fuck it. Practical. Clothes clean fit, neutral color, one quality item. कपड़े उसके ये होते हैं, clean fit, neutral color, one quality item. Social, greet staff by name at 2-3 spots. जब भी social वो greet करेगा किसी बंदे को, अपने staff को, वो उनके नाम याद रखेगा. Boundaries, I don't do 1 a.m. ping pong. Let's clock a time tomorrow. मतलब he has a boundaries. He don't do certain shit like whatever the fuck there are other people are, calling, bro. Yeah, let's meet at 1. No, bro. I have boundaries. I would come tomorrow. Lock this shit. That place is too loud. We will do. I'll leave at 7:30 either way. So this is like all the shit is bounded. This dude know what the fuck he's doing. Logistic, reduce friction. What it is, India is a high friction. Traffic, family, safety, attraction dies if logistics are messy. तो अगर तू बंदी से मिलना चाहता है, then you have to be very smart in order to create the smooth logistic. Science is brain avoid hassles, friction kills follow through, clear planning, less decision fatigue, more yes. So make sure you just don't like let her know, yeah, I would see you there. I mean, the Uber should be on her gate and the place should be already decided. Table should be the booked. So जब वो इस हिसाब से she would see you, she would absolutely be more inclined towards you because she don't have to make a decision now. Everything is more cleaned by your side. Practical, daily light or early evening, public entrance, short window. So जहाँ भी जाना है तो make sure कि उसको बता दे कि यार whether it has to be 1 or whether it's gonna be evening, or make sure it's a short window, like it's not for 1 hour or 2 hours, just for 20 minutes or 30 minutes. That's it. Keep it very small so she feels chill. Or public people, like public entrance, she need to feel secure, like you're not just kidnapping her. Always an exit door, she can leave first, you're fine. If she wants to leave first, that's okay, you can go, that's all right. So nothing, no drama, like yeah, you can stay, fuck, that's fine. Say this, meet at the main entrance, 25 minutes, you can bounce first if you need. That's what you say, and that's how you start it. Because once you know that who she is meeting, where she is meeting, and so she would feel safe. You just can't call like, yeah, let's take you. She doesn't know you, bro. Text. Cadence that hold frame, what it is. Without tone, face, text get misread. Your cadence must signal order and calm. बहुत से भाई लोग जब text करते हैं तो the thing you need to understand, when she's reading the text, वो तेरी body नहीं पढ़ रही, वो सिर्फ तेरे text है ना, तेरे को पूरा
imagine कर रही है. So your text need to be very like they need to be framed and they need to be ordered. Text strips prosody tone. The brain guesses intent from timing and length. Erratic bursts read as unstable. Long essay read as pressure. तो भाई जब जब brain जो है ना उसका guess कर रहा है intent based on the timing. If you're just texting her fucking at the midnight, it means you're fucking lonely or you're just horny and that's why you're texting. And also define as the what is the length of your text. If it's like too long, it's and like like ये कर रहा है फिर दूसरा कर रहा है तीसरा कर रहा है, so it's like you understand, boom boom boom. Nah, that's erratic, that's burst, like that's unstable, this dude is fucked up. And long essay reads as pressure, मतलब बहुत ज्यादा लिख रहा है कि ऐसे में a kind of like paragraph में, it's a kind of pressure, so she doesn't want to read all of it. So what you got to do is two short line max, that's it. Invite with time, place plus window. If you want to invite her, that's the way. टाइम जगह और विंडो कितने टाइम के लिए, दैट्स इट. सिंपल ब्रो यार. लेट नाइट टेक्स्ट, they can work if you already have comfort. Without it, they read low effort or sexual only. Is the pattern, not the clock. You understand it? Say this. Free Tuesday, 7:40 minutes, lock in our rank. Allow a screen tone without face. What it is? Digital kill warmth. You must inject tone with structure, not emojis. Science without facial cues. The reader project. More short, concrete message, reduce projection. So what you need to understand is जब तू उसके साथ text कर रहा है when you're talking to her and it's pretty fun. But उस text के द्वारा वो feel कैसे करे वो like how she feels the warmth. What you gotta do. The science is she can see you, you are behind the screen and you're stuck, you're तेरे sentence में ना वो structure होना चाहिए. So तेरे को warm कैसे देना, like how she feels the warmth. Say this. If you guys have already met, तो तू बोलेगा you made me laugh today, next Tuesday 7 done. मतलब तू already उसके लिए decision बना रहा है और तूने warmth दे दी कि तूने मेरे को आज हंसाया, so next Tuesday 7 done. Is pawn attention for pressure what it is? Pawn train spectator mode, watching yourself crave novelty and spikes performance thoughts. Now you need to understand भाई जितना ज़्यादा बंदा pawn देखता है ना उससे क्या होता है, उसका mind जो है ना वो train हो गया. So now he's just watching himself. Like when he's talking to her, he's fucking watching himself. He's judging himself. He has no root here. अब वो अपने आप ही से आर्गुमेंट करेगा कि यार मैंने ये जो बोला ये सही बोला क्या. Craves novelty and spikes performance thought. So he would create craves novelty, like like शांति होगी ब्रो, मैं कुछ और बोल देता हूँ. शांति होगी, नहीं शांति नहीं चाहिए यार, ये हंस क्यों नहीं रही, हाँ हाँ. So he's trying to fill the gap just because he has he had watched, इस बंदे ने बहुत ज्यादा porn देखी है, he just had scrolled so much shit. So what he's doing is now he's performing. Okay. Science. Repeated high stimulation shift arousal. लेस रिस्पॉन्स टू स्लो बिल्ड. अब जितना ज़्यादा स्लो रिस्पॉन्ड आ रहा है, जितना ज़्यादा वो उससे बंदी से बातें कर रहा है, बट रिस्पॉन्स जो है ना काफ़ी स्लो है, तो बंदे को फील नहीं हो रहा कुछ यार कि यार हाँ आगे बढ़ भी रही है बात या नहीं बढ़ रही है. तो इससे क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है बंदे पे कि यार ये खामोशी जो है ये ज़्यादा आ रही है एंड शी इज़ नॉट रियली टॉकिंग, शी इज आई एम नॉट फीलिंग हर. सो उससे क्या होता है ब्रो, परफॉर्मेंस माइंड रूइंस प्रेजेंस एंड कन्वर्सेशन फ्लो. और जब परफॉर्मेंस माइंड से वो बंदा ऑपरेट करता है कि इसका इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग, ही वो बंदा ओवर स्टिमुलेटेड था थ्रू रील से, थ्रू पॉन से, और उस नॉवल्टी से वो क्या कर रहा है कि वो सिचुएशन को फिल करना चाहता है और वो कन्वर्सेशन क्या करता है, रियून कर देता है. couldn't really carry the conversation all the time. अगर साइलेंस आता तो वो बोलता है ये क्या है. So practical reduced novelty beings put attention back into real pacing, slow breath, slow voice and slow eye contact. So क्या कर सकता है तू कि भाई वो नॉवल्टी को थोड़ा रोक दे, put attention back, अपने अटेंशन को अपने पास ला, जो पेस है वो स्लो कर, अपनी सांसों को स्लो कर, अपनी वॉइस को स्लो कर, आई कांटेक्ट जो है सही रख. एक्शन ब्रीथ प्लस स्पेस. माइक्रो रैप्स, वन लाइनर टू थ्री स्टेंजर डेली आफ्टर थ्री. इनवाइट स्क्रिप्ट ऑलवेज टाइम टू प्लेस विंडो. ऐसे बोलना है तेरे को. लैंग्वेज लेंस होनी चाहिए. वार्मथ जो है वो तेरी टंग में होना चाहिए. लॉजिस्टिक जब बोलेगा किस जगह टाइम ऑल दैट शिट वो इंग्लिश में बोल, ताकि उसमें एक लॉजिस्टिक है. सो शी गेट टू नीड, शी डोंट नीड टू फील द वार्मथ हियर. सो वार्मथ देनी है तो वो अपनी लैंग्वेज में बोल, पंजाबी, उर्दू या हिंदी, व्हाटएवर द फक. बाउंड्री लाइंस. प्री राइट 3 फर्म लाइंस यू विल यूज. मतलब ऑलरेडी एक लाइन जो है ना वो अपने माइंड में लेके ही चलना कि भाई आई विल लीव एट 7:30 इधर वे.
So now you're setting a boundary that this man is busy. He's a man with a fucking shit doing. So she would feel once like I will leave at 7:40. So no matter what, I'm still going. You got, I might drop you, or your car or your driver would come. All that shit. It's already planned, right? Profile sweep, remove flex, add face daylight, full body neutral, one competent shot, one friend shot. That's it. Review man, don't lose and screenshot it. Fuck. It was a long video, man, and I hope you guys fucking learn something, भाई कल को बंदी से बातें करता तो ये चीजें याद रख ले. It's not her, it's you. Take care, man.